and we are very much honored and pleased to welcome Dr. Manoj Kumar, Associate Professor, University Department of Education, Kolhan University, Chaibasa. Sir is having 14 years of teaching experiences in teacher education courses, an approved counselor in MA in Education and B.Ed program of IGNOU, guided and awarded approx 30 M.Ed students in dissertation, former visiting team member of ERC NCT Bhubaneswar, at least 8 papers published in reputed journals, also the member of international and national seminar, workshops, conferences, orientation programs attended. Dr. Manoj Kumar is with us for sharing his views, ideas, and thoughts on the topic web-based learning and online examination system. Yes, sir. Good afternoon, sir, and welcome, sir. Good afternoon. Am I audible? Yes, sir. Sure, sir. So first of all, very good afternoon to all the participants and all the members who are available here in a 2 days international webinar. First of all, I will thankful to Santosh Mahato sir, Rajesh sir, and special thanks to Dr. C.K. Pankaj sir, convener cum principal of Uday Memorial B.Ed College, who has invited me as a resource person in 2 days international webinar. Certainly, this is a very important topic which is taken today, that is COVID-19 pandemic, its impact on education, resurgence and future scenario. I think my special thanks to all the organizing committee who has taken such a wonderful topic which is very relevant to present scenario. And this is a very tough task to a last speaker to speak something on this relevant topic, because lots of discussion have done from yesterday to till today. As we know that our NCERT director, Dr. H.K. Senapati, sir, yesterday has told very nicely. So we should know what is happening in the world. Based on that, we have to work upon that. Certainly, sir, we have to know what is happening in this world. And so many discussion has done on the various issues under this topic. And in this scenario, I have also assigned one innovative topic, that is web-based learning and online examination system. So without wasting our time, I'm switching upon my topic. I want to share a PowerPoint presentation. So as my slide is visible. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Yes, sir. Okay, very much. Thank you. So today's topic is web-based learning and online examination system. In this topic, that is very much relevant. What is going on in the present scenario, that is, we are locked down. Students are at home, teachers are at home, and all the parents are also at home. So what to do in this situation? At I think 22nd March till yet, we are locked down. And somehow in present scenario, we are little bit relaxation is given, but still our college and schools are closed. So there is a need-based, and we have to see the Albert Einstein has said, I do not teach anyone
I only provide the environment in which they can learn. So certainly we have to provide an environment to all the students. So if you'll see one book I have referred, Who Moved My Cheese for an Effective Change, written by Dr. Spencer Johnson. He said very clearly that if you do not change, you can become extinct. Change happen, anticipate change, monitor change, adapt to change, quickly change, enjoy change. Here I'm emphasizing enjoy change. Be ready to change quickly again and again. So certainly this quotation is written earlier, but it is now very relevant. We have to anticipate change, we have to enjoy change, and we have to ready to change quickly again and again. It is very much relevant in present scenario. So the need of the hour is, if you'll see what is the need of hour, that is, let us make use of this lockdown period as an opportunity and relevant to the present situation. हमें क्या करना होगा, इस लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना होगा. I will speak some bilingual also, so I think most of the students will also learn. This is the point. I'll provide you some solution also regarding the online exams. So we have to take an opportunity and relevant to the present situation. So engage the students continuously by interacting with them through online or any convenient form. What I have said here, engage the students. We have to, हमें बच्चों को engage करना होगा लगातार by interacting with through the online or any convenient mode suitable to you and your the student. Whatever the mode, बहुत सारे mode available है हमारे पास online platform पे. आज हम चर्चा भी करेंगे यहाँ पर आधे घंटे में. So in the, it is a time to adopt change. अब वो समय आ गया है, we have to adapt change to be relevant. Since the technology of online education and all the digital initiative have the possibility to revolutionize higher education. So my topic is web-based learning. So first of all, I have to see what is web-based learning. So web-based learning is often called online learning. कुछ नहीं, इसको online learning कहते हैं या e-learning कहते हैं, because it include online course content. Everything is available in online course content. Discussion forum via email, video conferencing or live lecture, जो भी हम लोग करते हैं, live lecture, or all possible through the web. सिर्फ web के द्वारा ये हो सकता है. Web-based course may also provide static page such as printed course material. कभी-कभी web-based के द्वारा आपको पास printed material भी आता है. So web-based learning क्या है? This is online learning और e-learning कह सकते हैं इसे. So web-based learning एक diagrammatic form में देखें तो there is a help of a laptop, desktop or mobile. We have to get this. Yesterday we have talked about the blended learning also. One of the speaker has said regarding e-learning, webinar, videos, all this thing is running in the web-based learning. So web-based learning, that is an online mode of learning. So web-based, if you'll see, that is, web-based learning refers to type of learning that use the internet as an instructional delivery tool to carry out various learning activities. First of all, अगर online teaching करना हो, तो सबसे prior important चीज है, without internet, without data, we do not go for online learning. So web-based learning में सबसे important बात आ जाता है internet. Internet as an instructional delivery tool to carry out the various learning activities. It can take the form of pure online learning in which the curriculum and learning are implemented online without face-to-face. यहाँ हमें क्या करना है? Without face-to-face. There is no face-to-face. Everything is done by the online mode. So none face-to-face using web technology. Whatever you're using, web technology. It is learning that occur with lesson conduct via the internet. So with the help of internet, हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना? और यहाँ पर face to face नहीं होता है. So internet level transfer of knowledge and skill. So this involve discussion, forum and course content through email, live lecture and videos. हम इस माध्यम से
हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं थ्रू द वेब बेस्ड लर्निंग के माध्यम से. So teaching material that is presented via internet is specifically the world wide web, www जिसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा. Then next is, I think क्या हो गया ये? Yes, sir. The slide is not moving. That's okay. Next slide. So flexible learning. So flexible learning, there is a what we have, that is in web-based learning, there is a flexible learning. So flexible learning, just in time and continued learning anytime and anywhere. Earlier in a face-to-face mode, what we have to do, we have to gather in a campus in a certain time, and 10 to 4 or whatever the time is there, we have to go for a learning. But here there is no time. In the morning, just you have seen in Finland, there is a morning, and in some other part there is evening. So this is a flexible learning. किसी भी समय हम learning कर सकते हैं. So when to use web-based learning? So when your learners need flexible training hour, when live group work is essential to learning well, when application of learning need constant reinforcement, कब कब जरूरत पड़ेगा web based learning का? तो when you need training to be a cost effective, when your task forced in geographical distribution, when your learner are not technically oriented, आपके learner अगर technically oriented नहीं है तो वहाँ web based learning की आवश्यकता पड़ सकती है. When part of a training objective is network among learner, when your need training to be available on demand, when you want to accommodate different learning style. So these are the point we have discussed when to use a web-based learning. So here also in a web-based learning, we have to know that these two terms. Earlier also one speaker have discussed the synchronous and asynchronous. So synchronous is what? Asynchronous, the transmission of a data is sent in a continuous stream at a constant rate. Synchronous communication required that the clock in the transmitting and receiving devices are synchronized, running at the same rate. आप कह सकते हैं जो भी आपका synchronous हो रहा है, जैसे chat room, video conferencing, ये सारे synchronous के द्वारा हैं, ये कहलाते हैं, ठीक है. Then synchronous बहुत fast होता है, वहाँ कोई gap नहीं होता है. जबकि asynchronous में बात होते हैं, the asynchronous, the transmission of a data generally without the use of external clock signal, where data can be transmitted intermittently rather than the steady stream, like letter, like email, like television, like radio, like a discussion board. These are the asynchronous. जहां आप कह सकते हैं कि transmission बहुत slow होता है, जहां there is a present gap between the data, वहां asynchronous होता है. So web based learning में ये दो term को जानने की आवश्यकता होती है. अगर आप देखें तो डिजिटल इनिशिएटिव अगर क्या क्या लिए गए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो एक स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, PG Pathshala, these are the digital initiative taken by the government of India. Here, my point is here, today I will show you different platforms so that in this COVID-19 situation during the lockdown period, how the people will learn through the web. I'm trying to focus on that and some tools which helps you in examination. So first one is Swayam. स्वयं में अगर आप जाने तो वहां मूक एक शब्द आता है, दैट इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस. हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, और ये मूक के द्वारा क्या होते हैं कि आप वी नीड टू डिजाइन ए सॉल्यूशन टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल. द मूक्स एक आए हैं जो डिलीवर करते हैं कंट्रीज में नॉट सॉल्व द
problems and the purpose. So indigenous MOOC seems to be a viable solution. So MOOC जो है massive online open courses एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आया है जो different courses को घर में बैठे हुए आप कोर्स कर सकते हैं, चाहे इनफॉर्मली या फॉर्मली। ये MOOCs के द्वारा ही ये आते हैं स्वयं, जो स्वयं एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है जो इंडिजिनस MOOCs के द्वारा लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2016 को, और ये जुलाई 9 2017 को प्रेजेंटेड किया गया था। ठीक है, देन स्वयं को अगर देखें तो व्हाट इज स्वयं? स्वयं इज अ शॉर्ट फॉर्म। इफ यू सी द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, दैट इज अ स्टडी वेव्स ऑन एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। सो आपको एक्टिव लर्निंग बनाएगा, किसको? तो यंग एस्पायरिंग माइंड्स को। तो स्वयं इज देयर। व्हाट इज स्वयं? A little bit information I am providing here. Initiated by the government of India, that is achieve the 3 cardinal principle of education policy, that is access, equity and quality. ये 3 policies पे काम करते हैं और provide करते हैं best learning resources to all स्वयं के द्वारा, including the most disadvantaged and seeking to bridge the digital divide. अभी जो सर बिजू सर भी बात कर रहे थे, आई थिंक ये गैप को दूर किया जा सकता है स्वयं के द्वारा। ठीक, स्वयं प्रभा आगे बताएंगे। तो स्वयं में 1 steps web and mobile based interactive e-content for all course, high quality learning experiences using multimedia or anytime anywhere। आप कहीं भी बैठ के स्वयं के फीचर्स को स्वयं के द्वारा कोर्स कर सकते हैं। State of the art system that allow easy access, monitor and certification, peer group interaction, discussion forum वहाँ हो सकता है, and hybrid model of delivery that adds to the quality of classroom teaching। ये स्वयं के फीचर्स हैं। अगर इसके फ्रेमवर्क को देखें तो गाइडलाइन फॉर डेवलपिंग ऑनलाइन कोर्सेस, ये आपके स्वयं में आता है। पहले तो ये गाइडलाइन डेवलप्ड हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ 2016 में, यूजीसी इसको रेगुलेशन लाया 2016 में, और गाइडलाइन डेवलप्ड हुआ कोर्स अंडर द स्वयं 2017 में। स्कोप अगर आप समझने की आवश्यकता है तो courses to meet the need of a lifelong learner. As we know, we have a professional development courses, lifelong learning is there. So different courses are available in Swayam portal. So skill-based courses are available. Curriculum-based courses from diverse discipline. Advanced curriculum and professional certificates course is there. Independent course is there. इंडिपेंडेंट कोर्स के अलावा स्कूल एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। स्वयं का एक पोर्टल है, एनीबडी कैन विजिट द स्वयं पोर्टल एंड दे कैन एनरोल देयर सेल्फ, एंड दिस इज वन प्रोसेस अ जर्नी इन अ फ्यू steps I can remind you. You have to go a registration in a Swayam, discover course, in which course you are interested, you discover it. There are so many courses are there. Enroll yourself. This I am talking about informal learning. Learn at your own place and place. आप अपने हिसाब से पढ़ें. Get clarification online. Submit online assessment and वो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. Informal learning भी है. कुछ यहाँ formal learning courses भी available है. जैसे आप देख सकते हैं, here is a formal learning. Complete your course. Registered for exam, pay online, write exam, get certificate, यानी get credit transfer towards your certificate. यानी कि there are various courses available there and you can go ahead for a Swayam portal. If you see the Swayam globalizing your teaching, teacher API score, ये लोग सोचेंगे कि क्या फायदा है, तो ये आपका API स्कोर को भी इनहांस किया जा सकता है इससे। कंटेंट राइट्स अवेलेबल है। कैरियर एडवांसमेंट थ्रू अर्पित भी है ये। व्हाट इज अर्पित? आई कैन से one minute. That is अर्पित, that is an annual refresher program in a teaching. That is अर्पित. That it has been decided by the UGC that successful completion of the course offered under the अर्पित after the 40-hour course, तो वो आपका इक्विवेलेंट माना जाएगा एक रिफ्रेशर कोर्स के हिसाब से। अगर आप 40 आवर का इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को आप कोर्स करते हैं, दैट इज वन रिफ्रेशर कोर्स। सो थ्रू अर्पित एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, दैट्स आई हैव डिस्कस कैरियर एडवांसमेंट थ्रू अर्पित। ओके, देन आई एम स्विचिंग अनदर वेब बेस्ड कोर्स यू कैन डू, that is a Swayam Prabha. The Swayam Prabha is another free DTS channel for education. अब जिसके पास अगर
इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टीवी पे स्वयं प्रभा के द्वारा फ्री डीटीएच चैनल के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्वयं प्रभा is conceived as a group of 32 DTS channel devoted to telecasting of high quality educational program in 24/7 basis पे available है। So every day there will be a new content for at least 4 hours, which would be repeated 5 more time in a day, allowing the student to choose the time for their convenience. ये आपका 4 घंटे का प्रोग्राम 5 बार रिपीट होता है। You can see it through the Swayamprabha. The channel are uplinked from the by says Gandhinagar. The content are provided by following UGCC, IGNOU, NCERT के द्वारा content provide किया गया, develop किया गया है इसके द्वारा। InfluNet Center maintain the web portal. Then इसके भी कुछ objectives हैं। Higher education, curriculum based course content at postgraduate and undergraduate level, covering diverse disciplines such as arts, science, commerce, performing arts, social science and humanities. मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये सभी के लिए, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, सभी के लिए यहाँ पर स्वयं प्रभा के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, आइदर पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। आप देख सकते हैं इन स्कूल एजुकेशन ऑल्सो फ्रॉम 9 to 12 modules for a teacher training as well as a teaching and learning aids for children of India to help them understanding the subject matter, as well as for assistance for 11th 12th also preparing a competitive exam. So in a higher education, in a school education, in a secondary school education, सभी के लिए यहाँ पे स्वयं प्रभा के द्वारा ये अवेलेबल कराया गया है। The next one is NDL. NDL is the National Digital Library of India. I think all of you know this Ministry of Human Resource Development under the National Mission on Education through Information and Communication Technology has initiated the NDL, that's the National Digital Library project to develop a framework of virtual repository of learning resources through a single window search facility. एक ही विंडो पर सारे facilities नेशनल लेवल पे डिजिटल लाइब्रेरी अवेलेबल हो गया है, जिससे आपको फायदा उठाया जा सकता है। ये आपको समझने की आवश्यकता है, ये रिसर्चर को भी समझने की आवश्यकता है, स्टूडेंट्स को भी समझने की आवश्यकता है, एज वेल एज ऑल द टीचर्स को भी समझने की आवश्यकता है। हाउ द एनडीएल इज गोइंग टू हेल्प यू in a web-based learning by sitting at home in this COVID-19 pandemic situation, how you are going to be learned through the NDL. So educational material are available for user ranging from primary to postgraduate level. बच्चों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, सभी के लिए NDL पे आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पे ये मटेरियल अवेलेबल है। So NDL has been designed to benefit all kind of user like student, teacher, researcher, librarian, and all of them. So information can be personally based on the educational level, choice of language, difficulty level, media of content, such as other factor. This is thus like a customized service provided in a 24/7 integrated environment where learner can find out right resources with least effort and a minimum time. मैं ये बार-बार कह रहा हूँ, that is available into 24/7 whole day, every time, anytime that is available. You can access by sitting at home. So a repository host content from multiple subject domain आपके पास available है. There are 60 type of learning resources available, book, article, manuscript, video. Item are available in 70 languages. Here, my point is to focus on the different web-based learning so that you explore with your own. आप अपने से इसको explore करेंगे। ये मैं यहाँ सिर्फ point touch कर रहा हूँ आप different web-based learning को। There are so many web-based learning, लेकिन मेरा यहाँ पर कुछ specific point out करने की आवश्यकता इसलिए है ताकि आपको जो है समूचा ना करके कुछ को ही अगर आप अपने उस पे कमांड करें, उसको इफेक्टिवली यूज करें, आई थिंक दैट इज मोर बेनिफिशियल. So I am just touching different headings here.
That is how to assess this NDL. You have to go for this link I have provided. Certainly this PPT I'll provide to the organizing committee. They will display you this web page. Link is available for NDL, and through this you can connect with the NDL. So NDL system is accessible to all users for general browsing. However, one need to register with a user ID and password and log in using those for accessing some classified material. So this is the NDL. There is another ePathshala, EPG Pathshala. What is that? Is EPG Pathshala. So EPG Pathshala is an initiative of MHRD under its National Mission on Education through ICT that is being executed by UGC. UGC के द्वारा EPG पाठशाला स्टार्ट किया गया MHRD के द्वारा, जिसमें इसका मुख्य रूप से ये है. Somebody is writing. I think please stop this activity. So let's please see the host. What is how to remove Yes, sure, this. sir. Yeah, the content and its quality being the key components of education system, high quality curriculum based interactive e-content in 70 subjects across all disciplines of social science, arts, and humanities, natural and mathematical science. So ePathshala is available, and through that different education you can take in a higher education. Here there is some another digital material, digital learning tool is available. I think all of you are acquainted, like Google Meet is available, Zoom is available, Cisco Webex is available, Jitsi Meet is available. These are the video conferencing tool. Right now we are using the Zoom and different Google Meet in our India generally. There is a Team Link is also, then Google Hangout is also we are using for digital learning tool. So Manoj sir, can you hear me? Yeah. Sir, ये आप enable the remote control for all participant पे screen पे वो enable कर दीजिए, तो screen पे कोई लिख नहीं पाएगा अपने end से. मैं यहाँ पे कर दिया हूँ. I have not understood. Sir, share screen में जो वो पेन जो चल रहा है ना, हाँ, वो आप sharing screen में जाइएगा, enable the remote control of all participant application कर दीजिएगा, तो कोई लिख नहीं पाएगा. अच्छा चलिए, अब तो थोड़ा देर बचा है, अब लिखने दीजिए, इसको लिखना है. Okay, sir. Let us conclude this part. So this is the first part is over, that is web-based learning. Another is my request to all the participants, try to understand, don't give to the children to writing this part. Okay. You just pay attention another 15-20 minutes. I think that is beneficial for you. Another big important topic I am going to conclude here, that is online learning. That is, sorry, online examination. Web-based learning is over. Online examination, that is a technological term in which exam are taking on computer instead of a traditional pen and paper based examination. Right now we are in lockdown. In that situation, our university and school are planning for an online examination. So it will replace the traditional paper pen based examination in future. So online examination we have to learn so how to conduct this one. So online examination is conducted to the internet. Online examination अगर conduct करना है तो वो conduct हमारा internet is the main source. वो हमारे होने की आवश्यकता है, उसी के द्वारा online examination conduct होगा. It can conduct online. It is a modern method of taking exam. एक modern method माना जा रहा है इसको, और candidate is given a limited time to answer the question and after the time expired, the answer paper is disabled automatically. एक certain time provide किया जाएगा कि चलिए 1 घंटे का एग्जाम है, half an hour का एग्जाम है, और एग्जामिनेशन में आपका वो क्वेश्चन प्रोवाइड होगा और आंसर प्रोवाइड होगा, आंसर लिखना है आपको, उसका डिसेबल हो जाएगा वो. The examiner will evaluate answer either through the automated process or manually, and the result will be sent to the candidate to the email or via available in the website.
So it has based on quantitative approach and it is the form of a closed and open-ended question. यहाँ एक बार क्वेश्चन आ रहा था, कल भी उठ रहा था कि क्वेश्चन किस प्रकार ऑनलाइन एग्जाम किस प्रकार लेंगे, तो आप जानिए कि ओपन और क्लोज दोनों तरह के एग्जामिनेशन यू कैन कंडक्ट. What is the scope? That is, the online examination is designed for educational institution like school, college and private institution. ये सभी के लिए डिजाइन किया गया है and can be used anywhere, anytime, and it is web-based application. No restriction that examiner has to be present when the candidate take the test. कोई जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर को उपस्थित होना है, गार्डिंग करना है जैसे फेस टू फेस मोड में होता था. Easy to conduct, सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं, जनरेट क्विक रिजल्ट ले सकते हैं आप यहाँ पर. ठीक है, तो फीचर्स जैसा आप देख रहे हैं, इट इज सिक्योर, इजी टू यूज, रिलायबल, एक्यूरेट, नो नीड ऑफ एग्जामिनर. दैट इज सम फीचर्स. अगर आप देखें, अब मैं आऊं मेन पॉइंट पे कि वेब बेस्ड लर्निंग के बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस प्रकार कंडक्ट किया जा सकता है. तो गूगल ने प्रोवाइड किया है गूगल डॉक. गूगल डॉक में आप देखेंगे तो 4 चीज अवेलेबल है: गूगल डॉक, गूगल सीट, गूगल स्लाइड एंड गूगल फॉर्म. एंड दिस गूगल डॉक क्या है पहले समझने की आवश्यकता है. तो गूगल डॉक इज अ फ्री वेब बेस्ड एप्लीकेशन इन विच document and spreadsheet can be created, edited and stored online. File can be accessed from any computer with the internet connectivity. अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है और आपके पास जीमेल भी है तो उसमें आप देखेंगे कि गूगल डॉक अवेलेबल है वहां पर. और वहां गूगल डॉक में आप एक जैसे आप डॉक्यूमेंट कहते हैं, जैसे आप वर्ड फाइल कहते हैं, ठीक वही आपका ये आपका अवेलेबल है गूगल डॉक. जैसे आप कह सकते हैं क्या, वर्ड फाइल. देन गूगल सीट क्या है? तो गूगल सीट एक एक्सेल सीट जैसे आप समझिए, उसी प्रकार गूगल सीट भी अवेलेबल है. सो गूगल सीट इज ए स्प्रेड सीट जैसे एक्सेल सीट होता है. प्रोग्राम इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ ए फ्री वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑफिस सूट ऑफर्ड बाय गूगल विद इन इट्स गूगल ड्राइव सर्विसेज. Then another is Google Slide, like PowerPoint is there. ठीक उसी प्रकार Google Slide is there. So Google Slide is a presentation program including a part of a free web-based software Office suite offered by Google within its Google Drive. Why I'm talking this thing? With the help of Google Doc, you can give and the student can write in a Google Doc एक sheet में वो create कर सकता है और लिख सकता है. I'll show you right now. The Google Form is there, another fourth one. So Google Form अगर आप देखें तो Google Form में, Google Form is a web-based app used to create form for data collection purpose. अभी आप देख रहे होंगे कि आपका जब रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो Google Form में आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया होगा. By sitting at home, you have got registered with Uday Memorial B.Ed College and you have registered and you are doing this webinar, or you are doing other national, international webinar also. So Google Form is there creating a registration form. Simultaneously, you can create a quiz also. Simultaneously, you can create a survey also. So if you see Google Form, तो क्या है? A simple way to collect information. Google Form पे मैं focus कर रहा हूँ. Google Form एक simple way to collect information, conduct survey, perform quick assessment. Here, this is a online assessment you can conduct with Google Form with a quick assessment. Can be shared with a link via email. आप लिंक को शेयर कर दीजिए ईमेल के द्वारा और एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं. Responses can be viewed immediately with the option to save them to a spreadsheet. मैंने कहा ना, responses को आप आराम से Google Sheet पे आप इसको शेयर कर सकते हैं और उस पे सेव कर सकते हैं. So Google Form को अगर आप देखें, मैं एक यहाँ पर आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल फॉर्म में कि docs.google.com अगर आप, दिस इज अ URL, अपने URL में अगर docs.google.com लिख देते हैं तो इस प्रकार का पेज आपका ये ओपन हो जाएगा. इस पेज में आपको अगर देखें तो यहाँ गूगल डॉक में 4 चीज नजर आ रहा है: डॉक, सीट, स्लाइड, फॉरम. ये 4 चीज का मैंने अभी डिस्क्रिप्शन अभी आप लोगों को दिया, जिसमें फॉर्म्स की चर्चा मैं कर रहा हूं. जहां पर आप देखिए ये प्लस का बटन छुपा हुआ है. ये प्लस का बटन जो है, दिस इज अ स्क्रीनशॉट, दैट्स व्हाई दिस इज ओनली वन पिक्चर इज देयर. आप इसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं
and then you can conduct the examination. This plus sign is there, is a blank sheet where Google Doc is opening. Then next is Google Form. Google Form को जैसे आप देखें, जैसे डॉक मैंने बताया था अभी, दिस इज द फोर्थ वन इज फॉर्म. इसको अगर क्लिक करेंगे आप तो ये आपका गूगल फॉर्म खुल जाएगा. और ये जब गूगल फॉर्म खुलेगा तो गूगल फॉर्म में यहाँ एक प्लस का बटन है. इस प्लस बटन को क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखिए कि मैंने बहुत सारे क्विज मैंने अपने स्टूडेंट्स का लिया है. वो क्विज फॉर्म में नीचे सेव रहेगा और वो क्विज जो है या आप ले सकते हैं, क्विज कहें या multiple choice question बोले या multiple plus subjective, both can be given. You can write what is mitochondria and then provide a line. They can write it answer, no problem. So that is a subjective based evaluation भी हो सकता है. Then आप देखें गूगल फॉर्म में किस प्रकार का फॉर्म क्रिएट होगा. तो जब प्लस को क्रिएट करेंगे आप, प्लस जब आप बटन करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका क्या ये इस प्रकार का अनटाइटल्ड फॉर्म खुल जाएगा. व्हाट इज दिस अनटाइटल्ड फॉर्म? अनटाइटल्ड फॉर्म मींस now you are going to create a form and then you write here this is a teacher education philosophy question, and then you create a objective based item. So my point is here to show you a picture, and then you have to explore with your own, and then you will get acquainted. No doubt in Indian scenario, all of the sudden COVID-19 came and we are locked down, so we have not got trained on this platform. So as I also learn by practicing this thing, so I am requesting to all the teacher educators, all the teachers, students, participants, to get practice these tools, and you are very early you can have a quick development regarding this field. So untitled form will be open. You can create a quiz, you can create a question paper, you can create a multiple choice question, you can create a multiple choice as well as subjective question. Anything you can create. There is option I am showing you. This is a multiple choice. If you click this, there will paragraph will come, and then this is a plus button. Another question you can give, and here also you can there is a I button. This is a setting button. You explore with yourself, and we certainly will acquainted with this Google form. Next is the Google Classroom is there. No doubt we are conducting a class and we are taking examination, but somehow we are providing a assignment also to the students, and how the students will submit their assignment. For that one platform is there, that is a Google Classroom. Google Classroom क्या है? The group sharing can be used to share content and resources with class. Completed work can be easily submitted and shared. What I am saying here, completed work can be easily submitted and shared. यानी आप कंप्लीट जो करेंगे उसको आसानी से आप टीचर को शेयर कर सकते हैं, एंड द टीचर विल इवैल्यूएट. सो क्लासरूम इज आल्सो अ ग्रेट स्पेस फॉर शेयरिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. सो गूगल क्लासरूम में अगर आप देखें तो इस प्रकार से अगर आप classroom.google लिखते हैं, अगर आप classroom.google लिखेंगे तो गूगल क्लासरूम खुल जाएगा. या आपके पास जीमेल अकाउंट है तो उसमें राइट साइड जाएंगे, वहां भी आपको मिल जाएगा गूगल क्लासरूम. तो गूगल क्लासरूम में जैसे मैंने बहुत सारे गूगल क्लासरूम क्रिएट किया हुआ है. मैंने एक किया हुआ है एमएड 2020-22 का कोल्हान यूनिवर्सिटी में, बिकॉज आई एम पोस्टेड देयर. सो इफ यू क्लिक देयर नेक्स्ट, तो आपको देखिए एमएड 2022 कोल्हान यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर खुल गया. आप इसको क्रिएट कर सकते हैं. आप इसे चाहें तो जैसे गूगल क्लासरूम एक प्लस बटन यहाँ नजर आ रहा है, ये प्लस बटन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ if you are a creator, if you are a teacher, you can create a group, and all the students send this code, and by sending the code they can join with this Google Classroom, and here all the students can join very easily in Google Classroom. If you'll see that this is a spreadsheet, there is a stream, there is a classwork, there is a people, there is a mark. Only thing you have to explore. This is a classwork. If you'll click the classwork,
then you will get classwork क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, बहुत सारे डिफरेंट असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स को दिए हैं, स्टूडेंट आसानी से इस पे अपलोड कर दिए हैं. सो हियर इज अ क्रिएट. सो माय पॉइंट इज हियर, बहुत सारे एप्स, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं. मैं सभी टूल्स को प्रैक्टिस करने का सलाह कभी नहीं दूंगा. मैं चाहता हूं कि कुछ ही टूल पे प्रैक्टिस किया जाए, लेकिन उस पे 100% प्रैक्टिस हो. सो आई एम प्रोवाइडिंग हियर गूगल डॉक, गूगल सीट, गूगल स्लाइड, गूगल form, and this Google Classroom. This is a very, very important one. You can submit the assignment with the help of Google Classroom, and the text can be conducted with the Google form. एक चीज और है यहाँ पे, that is one is Edmodo. This is also a mobile app for teaching. Edmodo is a cloud-based learning management application for teacher to conduct and collaborate with parent and students. So the students allow teacher to create academic group, distribute assignment and homework. एक अनदर ये ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने का प्लेटफॉर्म है Edmodo. So Edmodo में अगर आप जाएंगे तो भी आपको आसानी से ऑनलाइन टेस्ट और डिफरेंट चीज आपका कंडक्ट हो सकता है. So the last one I am talking about the another 5 minutes I will take. Kahoot. मैं बार बार कह रहा हूं बहुत सारे टूल्स को प्रैक्टिस नहीं करना है, कुछ ही टूल्स पे प्रैक्टिस करना है. So Kahoot is another tool. We can conduct a game-based learning platform है एक, used as educational technology in school and other educational institution. It's learning game है. Kahoot are user-generated multiple choice quiz that can be accessed via web browser or Kahoot app. So Kahoot can be used to review students' knowledge. ये Kahoot बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप इसको आप यूज करें, फॉर्मेटिव असेसमेंट करने का बहुत बढ़िया ये जगह है ये. सो Kahoot अनदर प्लेटफॉर्म है, अनदर टूल है. मैं इसको सजेस्ट करूंगा, आप इसको यूज कर सकते हैं. Kahoot में kahoot.com अगर आप लिखेंगे, इस प्रकार का Kahoot का पेज खुल जाएगा और इस पे आप साइन इन करके आप इसमें अपना ईमेल आईडी बना, सॉरी इसमें यूजर आईडी पासवर्ड बना के इसमें आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं. एंड देन दिस Kahoot का एक पेज है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है. यू कैन सी हियर. द लास्ट वन इज Mentimeter. जैसे अभी आप बैठे हुए हैं और हम जानना चाहते हैं कि इस वेबिनार में पूरे हिंदुस्तान से या पूरे विश्व से कि कहां से लोग आए हैं. मैं अगर कहूं कि from which country you are joined in this webinar, so this is a very good platform of Mentimeter. If just writing your answer, you can know कि this much candidate या this students this number of students came from this country and this country and this country. So very easily this Mentimeter के द्वारा आप एग्जाम एक गेम बेस्ड टेस्ट ले सकते हैं. Mentimeter, try to learn Mentimeter, MENTI, Mentimeter. That is a prepare, build interactive presentation with an easy to online editor, add question, poll कर सकते हैं, quiz कर सकते हैं, slide दे सकते हैं, images दे सकते हैं to your own presentation to create fun and engaging presentation. जैसा I told, this is a fun. I want to know कि from India कौन-कौन से स्टेट से लोग अभी इसमें पार्टिसिपेंट हैं. Only write your state's name. स्टेट्स का नाम डालिएगा, जो उसमें ज्यादा कैंडिडेट जहां से आएंगे वो हाईलाइट करेगा ज्यादा. एक बार ट्राई कीजिएगा Mentimeter. You can engage your audience, user their smartphone to connect to the presentation where they can answer question, visualize their response in real time to create a fun and interactive exposure. And then that is a follow-up. Once your Mentimeter presentation is over, share and export your result for further analysis and even compare data over time to measure the progress of your audience. अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो इस प्रकार से Mentimeter.com लिखेंगे आप, तो इस प्रकार का पेज खुलेगा और यहाँ आसानी से you can create interactive presentation and meeting whenever you are. So I have talked this much regarding the web-based learning, I have talked about the this online examination. I have talked the different tools of online examination. I hope
you have understood, and I think certainly so many participants are using these tools. My point is there that those who are not acquainted how to conduct the online examination, because yesterday few participants as asked to the Dr. Sanjay Bhuiyan is how to conduct the online examination. I think this is the best answer to all the participants, how to conduct the online examination as well as the web-based learning. So from my side, thanks to the organizing committee, thanks to Dr. C.K. Pankaj, thanks to Rajesh ji, and thanks to all the members who are there in this preparing, organizing this international webinar, giving me such a platform to discuss this innovative and interesting topic. Thank you once again. Now over to host. Firstly, we are very thankful to Dr. Manoj Kumar sir for your presence and even for sharing relevant and enriching lectures also relating on the various programs on this topic. It was really very informative, impressive session, sir. Thank you so much, sir. And it's over to Rubina ma'am, sir, for questioning. How to remove this screen? Oh, sir, 1 minute, sir. Hello? Yes, sir, I'll be online. Yeah. I can remove this screen. I have to stop it. Yes, sir. देखिए, you ऊपर में जो sir green type के दिख रहा है, stop, yes, stop कर दीजिए उसको. Stop तो नहीं. Stop sharing. Yes. Stop. Okay, yes. Sir. Thank you, sir. Sir, for the question answer session, it's over to Rubina ma'am. Rubina ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Swati ma'am. Good afternoon, Manoj sir. Very good afternoon. Rubina is back again for question answer round. Yeah. Sir, first question is from Rinku. Is web-based learning is effective education for better knowledge? If yes, then how will get practical knowledge? Yeah, this is a very good question. I think yesterday ma'am has discussed about the blended learning. I am not much favor with this web-based learning, because web-based learning is also a solution to get sitting at home. We can collect different knowledge through the web. Certainly, if you are a working person, we cannot move by taking a long gap from our department. So through the web, we can get acquainted with different courses. And this for the students, web-based, along with the web-based learning, it will go for blended learning. That is a mixing of this face-to-face as well as the online mode of learning. And certainly that is help the students. So certainly there is some positive and negative aspect. Take the positive aspect, and then you can collect so many information with the web-based learning. Thank you, sir. So another question is from Nirmala. क्या ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे को टीच कर उनका इवोल्यूशन सही तरीके से किया जा सकता है? देखिए, ये प्रश्न ऐसा है कि आज से जब 22 मार्च को हम लोग लॉकडाउन हुए थे, उसमें वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस कंप्लीटली ऑनलाइन टीचिंग. आई एम ऑल्सो इन सेम ग्रुप. आई एम नॉट एक्वेंटेड विद दिस ऑनलाइन टीचिंग, बट द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन ने ये सब कुछ सिखा दिया. तो ऑनलाइन इवैल्यूएशन करना खराब नहीं है. प्रश्न क्या है, एक बार फिर से रिपीट करें. क्या ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे को टीच कर रहे हैं उनका इवोल्यूशन सही तरीके से किया जा सकता है? मूल्यांकन सही तरीके से किया जा सकता है? मूल्यांकन अगर देखें, इवैल्यूएशन अगर देखें तो सही तरीके से नहीं हो सकता है, लेकिन जहां नहीं से बढ़िया है, यू कैन, आप एक बार करके देखें ऑनलाइन इवैल्यूएशन. आई थिंक दैट इज वेरी मच इफेक्टिव. आई थिंक मैं ये बता रहा हूं कि मैंने इसको प्रैक्टिस किया. जब मैं अपना YouTube पे लेक्चर देता हूं,
बहुत सारा, तो लगते हैं कि स्टूडेंट लेक्चर सुने या नहीं सुने, तो मैं क्या करता हूँ कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 मिनट्स के लिए ही ओपन होता है वो, और 10 क्वेश्चन होता है। तो देखिए वो बच्चे नहीं अगर पढ़े होंगे तो वो 2-3 नंबर लाते हैं, अगर वो मेरे लेक्चर को सुने हैं तो वो इवैल्यूएशन इफेक्टिव हो जाता है, उनको लगता है कि अभी इवैल्यूएशन होने वाला है, तो वो इनडायरेक्टली वो पढ़ते हैं उसको। तो कुछ ऐसे केसेस में इवैल्यूएशन करना दिक्कत है, नो डाउट टीचर्स का रोल बहुत बढ़ गया है, लेकिन इफेक्टिव होगा ऑनलाइन इवैल्यूएशन अगर आप करें। दिक्कतें हैं हमारे इंडियन सिचुएशन में, हमारे बच्चों के पास अभी भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। हम अपने रियल फैक्ट से दूर नहीं हो सकते हैं, दिस इज अ रियल फैक्ट, बट somehow we can say that कि अगर नहीं से बढ़िया है कि कुछ तो कर सकते हैं, कुछ बच्चे के पास इंफॉर्मेशन पहुंच सकता है, कुछ एसएमएस के द्वारा। अभी देखिए आ गया है कि एसएमएस के द्वारा